Hello, children. Now we are going to start your first book, that is Vistas. Say this. Your supplementary book is this Vistas. This is with the same book as you have another one. Flamingo and Vistas is also there. The very first chapter is the third level. This is by Jack Finney. You could see this. Now, before we read, you'll have to see this question. It is given here. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Curious means, I hope you know, some strange, unusual kind of thing. Do you have any experience like that? Because this chapter is talking about some waking dream kind of thing. Let's see what it says. It is about some waking dream of the main character of the lesson, that is Charlie. You'll see Charlie. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. What these two are, there are only two. These two are the level of a station. You know, as the main cities are having stations, these are means metro station kind to commute from one place to another within the city. It is for that. So the writer is saying through this character Charlie that the president and all the important people having railroads, Hartford railroads means whatever the railroad timetable network of the railways they are having, they'll swear. Swear means to take some words perfectly to show. They'll say that on the stake of timetables, stake means heap. You could see this word S-T-A-C-K, stake, heap. On the heap of timetable, they can swear, they can give the words that there are only two levels. But I say there are three. I mean, our character Charlie, he says that there are three levels. Because I've been on the third level of the Grand Central Station. He says that I have gone to this Grand Central Station. Yes, I've taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Once what he did, he went and talked to his friend, one who is a psychiatrist. Psychiatrist, you know, a doctor who treats mental illness. He went and he talked to him that I have got a third level. Then he is a friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station. What happened? He said that he told his friend, the psychiatrist, that the people say there are two levels, but I feel there are three. And the same problem he discussed with his friend. आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है. जब हमारे कैरेक्टर चार्ली को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल हैं. अब उसने सोचा किससे बताऊं, किससे डिस्कस करूं ये चीज़. तो ही वेंट टू हिज फ्रेंड और उसको बताया कि 3 levels are there. And he said it was a waking dream. See this word? Waking dream. He says waking dream means dreaming while you are fully awake. Means जागती आंखों का सपना कह सकते हैं. Wish fulfillment, nothing else. There is some wish you want to get it fulfilled. मतलब कोई इच्छा है जो तुम पूरी करना चाहते हो और इस तरह की बातें कर रहे हो. He said I was unhappy. उसके कहने का मतलब ये था कि मैं चिंतित रहता हूँ, खुश नहीं हूँ. That made my wife kind of mad. Mad means here not out of mind. Mad means here worried. When he explained it
जब मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने ही कहा तो मेरी वाइफ बड़ी चिंतित हुई, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all. Right? These are the problems you could see here. Insecurity, fear, war, worry. मतलब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर फील करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, ऐसे ऐसे डरे रहते हैं. सम वॉर may take place. वरी मतलब चिंताएं बहुत सारी रहती हैं. एंड द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी चीज़ें. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं शायद उन सब चीज़ों से बचता हूँ, एस्केप चाहता हूँ, फरार भागना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम दीज. वेल, हु डजंट. हमारे जो कैरेक्टर हैं मेन, दो कैरेक्टर अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स चार्ली और साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड. लेकिन यहाँ चार्ली कहता है कि कौन नहीं चाहेगा, हु डजंट want. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. उनका डिस्कशन हुआ, उसने कहा हाँ, everybody wants to escape, they wanna have a refuge, they wanna go somewhere else. कुछ हम कई बार अपने आप को इसीलिए बिजी करते हैं. कोई गार्डनिंग करता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई म्यूज़िक सुनता है. उसने कहा चाहते तो सभी हैं रियलिटी से भागना, बट हु गोज़ टू थर्ड लेवल. नोबडी वॉन्डर्स देयर. कोई वहाँ नहीं घुस जाता, तुमने एक थर्ड लेवल बना लिया. बट दैट्स द रीज़न ही सैड, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड. अब ये रीज़न लगा, मेरा दोस्त एग्री हो गया. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग. Now you know he was fond of collecting stamps. उसको एक शौक था stamp collection का. Stamp collection is called philately. Means he was very fond of this philately. वो डाक टिकट होते ना, पोस्टेज स्टैम्प, उन्हें जमा किया करता था. तो उसने कहा आपकी ये चीज़ भी इसी और इशारा करती है that you want to escape from reality. That is your stamp collecting, for example. That's a temporary refuge. That's a temporary refuge. मतलब you want to take a kind of shelter, protection. You want to be away from reality. ये तुम्हारा temporary refuge है from reality. सच्चाई से भाग खड़े होना. Well, maybe. But my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. अब उसने example दिया अपने grandfather का. उसने कहा अगर हम, because generally we say, क्या होता है बच्चों, हमेशा ये कहा जाता है पहले ज़माने में ये था, पहले इतना अच्छा था, पहले लाइफ ईजी थी, पहले सब कुछ बहुत ऐसे था. दैट्स वाई चार्ली इज़ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हिज ग्रैंडफादर. उसने कहा मेरे दादाजी थे, वो तो बहुत अच्छे समय में जीते थे, बहुत बढ़िया चीज़ें थी. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल. सब कुछ शांति थी. तो उन्होंने क्यों ये किया? इन हिज डे, फ्रॉम ऑल आई हेयर, and he started my collection. He started my collection mean जो मेरा कलेक्शन है, जो राइटर कलेक्शन ले रहा है ना, वो उसके ग्रैंडफादर का ही कलेक्शन है एक्चुअली. तो उसने कहा ये मैंने उन्हीं से लिया है, उन्हीं का कलेक्शन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है आगे. तो वो क्यों करते? उस समय तो बहुत अच्छा जीवन था, आसान था, इजी था, सब कुछ परफेक्ट था, वॉर नहीं होते थे, पीसफुल लाइफ थी, इजी वे में जी रहे थे वो. तो व्हाई डिड ही? इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. ब्लॉक्स ऑफ 4, you know, it's a nice collection of my grandfather too. Blocks of 4 particular, practically every US issue. Practically every US issue means whatever new issue comes. आपने तो देखे भी नहीं होंगे postage stamp बच्चों, because nowadays you send your messages and all by email and WhatsApp and so many things are there. तो this is what, ये जो भी नया इशू देश में आता था उसी के किसी भी कंट्री में पोस्टेज स्टैम्प बन जाते थे. तो उसने कहा देयर इज़ एवरी इशू प्रैक्टिकली, पर्टिकुलरली, स्पेशली इज देयर ऑफ यूएस इशू. फर्स्ट डे कवर्स. अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है, इट विल बी एक्सप्लेन यू लेटर, बाद में आएगा आगे, हम आपको बताते हैं. तो उसने कहा दादाजी के कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर होता था और हर एक यूएस इशूज़ में शामिल था, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें.
President Roosevelt, it's a big name, children. President Roosevelt. President हुए अमेरिका के, यूएस के. President Roosevelt collected stamps too, अब एक प्रेसिडेंट को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों सच्चाई से भागना चाहेगा? वो क्या मेरी तरह वरीड होगा, परेशान होगा? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑल्सो कलेक्टेड स्टैम्प्स. उन्होंने भी स्टैम्प मीन्स जब उनके चार्ली के साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा कि तुम रियलिटी से भागते हो और ये स्टैम्प कलेक्शन उसका एक एग्जाम्पल है, तो हमारा कैरेक्टर चार्ली एग्जाम्पल देता है अपने ग्रैंडफादर का और फिर रूजवेल्ट का. Anyway, here is what happened at Grand Central one night. Last summer I worked late at the office. आगे का बताता है. उसने कहा देखो क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पर एक रात लास्ट समर. कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऑफिस में लेट आवर्स तक वर्क करना होता है, या तो ओवर टाइम होता है या एक्स्ट्रा वर्क होता है, जो भी कहें. तो ही वर्क टिल लेट इन द ऑफिस. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Subway मतलब वही ट्रेन लेने की कोशिश की. उसने सोचा घर जाना है, लेट हो गया, तो I must take some faster train. He thought about subway instead of bus. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. अब ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग से इसका इंट्रोडक्शन नहीं था. Only I told you the name. उसे कहा मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं एक आम सा साधारण सा आदमी हूँ. एन ऑर्डिनरी गाय, यू कुड सी हियर ऑन योर स्क्रीन, नेम्ड चार्ली. मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, नाम मेरा चार्ली है. 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit. What I was wearing? I was wearing a tan gabardine. Tan is a color like dark brown kind of color. एंड गैबरडाइन इज अ काइंड ऑफ कोट. तो उसने कहा एक मैंने कोट वाला सूट पहना है एंड अ स्ट्रॉ हैट पहना है. स्ट्रॉ हैट ये जो स्ट्रॉ जैसा दिखता है, ऐसे बना रहता है, विद अ फैंसी बैंड. उसके ऊपर एक बैंड लगा हुआ है, विच आई एम वेयरिंग विद अ फैंसी बैंड. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. अब अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. एंड नास्टिंग वॉट एवर द वेयरिंग्स आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू टाइम, जो कुछ चल रहा होता है सब उसी तरह के ड्रेस में दिखते हैं. तो वही उसने कहा कि आई पास्ड एंड देयर हैड बीन सो मेनी पीपल लाइक मी एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं सिंपली चला जा रहा हूँ, किसी से एस्केप की कोई ट्राई नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. ओनली ही वॉज इन अ haste because he was already late and the wife would be waiting. That's why he was having his fast steps to reach the station because he wanted to go to his apartment to his wife. He reached the Grand Central station. He said, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. This is the name of the place. जैसे कई बार स्टेशन में, कई जगहों में, बहुत बड़े सिटीज़ में क्या होता है, कई जगहों में हो सकता है अगर लंबा स्टेशन है उसके गेट कई जगहों में हो सकते हैं, एक्सेसिबल होता है कई अलग अलग जगहों से. तो उसने वही बताया कि वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैंने उसमें एंट्री ली एंड वन डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. अब वो फर्स्ट लेवल में जाना चाह रहा है. फर्स्ट लेवल मीन टू द एज यू कैन कॉल स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी. तो वहाँ पर क्या होता है, मेट्रोज में कुछ बिल्डिंग अंडरग्राउंड भी होती है, बेसमेंट काइंड. तो वो अभी क्या चाहता है कि ही वॉन्टेड टू गो टू फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century. जैसे सिंपल ट्रेन होती है 20th century की, वही ट्रेन उसे भी पकड़नी थी, एक लोकल ट्रेन. देन आई वॉक डाउन. अब चार्ली नीचे आता है. अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. अनदर फ्लाइट, फ्लाइट का मीनिंग देख लीजिए. ये फ्लाइट मीन्स नॉट फ्लाइट, ये किसी एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं. फ्लाइट मीन्स है स्टेयर्स. स्टेयर्स का एक और पार्ट उसे नज़र आता है, वो नीचे की ओर आ जाता है टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबर्बन ट्रेन्स. सबर्बन मतलब विच आर रिलेटेड टू सम आउटर एरिया. जो सिटी का एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सबर्बन, उस एरिया से रिलेटेड. तो ही वन दर suburban trains he wanted to take and leave
from. Suburban trains leave from. यहाँ से क्या होती है? Suburban trains जाती हैं. ठीक है. The trains go, तो he had taken this. Then leave from. Ducked into an arched doorway heading for the subway. Ducked into. Duck means here to move head down, to enter. अब जल्दी से कहीं एंटर करते हैं, दैट इज झपाक से घुसना जिसे कहते हैं. एंड ही एंटर्ड ओवर देयर into that arched doorway. Arch, you know, that round shape, like to have a building which is having some curved shape entry, like half circle or semicircle kind. He entered over there heading for the subway. Subway कहते हैं, I have told you already. Subway क्या होता है? Subway is something which goes underground, like. ठीक है, उस जगह में वो पहुंचना चाहता है ट्रेन लेने के लिए एंड गॉट लॉस्ट. लेकिन यहाँ पहुँच कर उसे ऐसा लगा जैसे वो रास्ता भूल गया हो. अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, कई बार एक जैसे दिखते हैं. तो ही फेल्ट हिमसेल्फ गॉट लॉस्ट. दैट्स ईजी टू डू. ऐसा हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं, खो जाते हैं अक्सर लोग. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times. अभी क्योंकि लोकल है वहाँ का, तो hundreds of time he had gone to the station. Hundreds of time. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि इसके साथ हर बार क्या होता है? Whenever he goes, he is bumping into to enter all of a sudden. Bumping, टकरा जाना, घुस जाना. जब भी वो आगे बढ़ता है उसे लगता है कि नए डोरवेज मिल जाते हैं, नई स्टेयर्स मिल जाती हैं उसे. शायद बहुत बड़ा स्टेशन उसका देखा हुआ नहीं है. इट्स मे बी लाइक दैट. एंड न्यू कॉरिडोर्स ही फाइंड. वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी. अब ये मतलब आज लेट हो गया है क्योंकि उसको ओवर वर्क किया था ना उसने, ओवर टाइम वर्क. लेकिन ये पहले का बता रहे कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नई जगहों में पहुंच जाता हूँ. तो वंस व्हाट हैपन, ही गॉट इनटू अ टनल. और ये टनल कैसी थी? अबाउट अ माइल लॉन्ग. टनल तो आप समझते हैं, अ लॉन्ग वे अंडर द ग्राउंड. एक पैसेज बना होता है बिल्ट अंडरग्राउंड टू रीच. शॉर्टकट हो जाता है, सीरीज में बहुत क्राउड रहता है, उसको ईजी करने के लिए टनल बना दिया जाता है. तो ही रीच टू अ टनल एंड इट वॉज अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड ही केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. अभी देखिए सरप्राइजिंगली जब ये इस टनल से चल कर गया तो ये स्टेशन में नहीं रहा बल्कि कहीं और पहुंच गया. रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आ गया. अनदर टाइम, एक बार ऐसी घटना घटी इसके साथ कि टनल में गया और वहाँ निकला. अनदर टाइम आई केम अप. फिर एक और बार बताता है, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. अब स्टेशन से 3 block दूर कोई एरिया है, एक पूरी बिल्डिंग बनी है जो स्टेशन से दूर है, लेकिन ये बिल्डिंग या ये एरिया ऑफिस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है. many kinds of offices are made over there. So once he reached to the lobby of Roosevelt, you could see this lobby of the Roosevelt Hotel. But another time he reached to the 46th street 3 blocks away from the station. दो बार ये घटनाएं इसके साथ घटी कि ये अलग जगह से चलकर कहीं और निकल गया. Sometimes I think Grand Central is growing like a ट्री. इसको कई बार ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है क्या रोज़ाना, रोज़ इसकी बिल्डिंग में और कुछ जुड़ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग एक या दो दिन में तो बनती नहीं है. यू नो इट टेक्स टाइम टू हैव द कंस्ट्रक्शन. इफ इट इज़ गोइंग ऑन, दे माइट बी नोइंग, द पीपल दोज हु लिव हियर, they would be knowing that the construction work of the station is going on. But he says it is growing every time like some tree, pushing out new corridors and staircases like roots. Every time, whenever he comes, he says that I find that there are stairs, new doorways. What is the reason? I find that every time there are something new. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeding its way under the city right now. अब इसे आगे ऐसा लगता है कि शायद इसके नीचे कोई बहुत लंबी टनल है पूरे स्टेशन के नीचे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, and nobody knows about it. It is as long as the city itself on its way to Times Square.
Time, excuse me. Times Square is a place. He says it is having its way to Times Square and maybe another to Central Park. Means these are the areas. Times Square is another area and Central Park is some other area. And they may be very much away from station itself, Central Station. उससे काफ़ी दूर रहे होंगे, तो उसे ऐसा लगता है कि ये टनल बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि आप उससे चलकर टाइम स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं या सेंट्रल पार्क तक पहुंच सकते हैं. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट. अब उसका मानना ये है चार्ली का कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एग्जिट बना हो. कैसा एग्जिट? एस्केप, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, टू गो अवे, a way of escape. This is given after exit. See this? A way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that. हो सकता है ये टनल भी इसी तरह जा रही हो, लेकिन इसके बारे में उसने कभी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया. What he says else, the corridor I was in began angling left and slanting downward. जब भी वो कॉरिडोर में एंटर करता है उसे लगता है कि इसके एंगल बढ़ रहे हैं. लेफ्ट, स्लैंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ उतर रही हैं. मीन्स उसे ऐसा लगता है कि बढ़ता चला जा रहा है. चिल्ड्रन, देयर इज़ एन इंग्लिश मूवी ऑन दिस दिस काइंड ऑफ टॉपिक. ऐसे टॉपिक में बनी है वो. उसमें क्या होता है, मेन कैरेक्टर ही इज़ हैविंग द पावर टू गो इनटू द ड्रीम्स, और ड्रीम्स में जब जाता है तो ही कुड सी दैट न्यू काइंड ऑफ एंगल्स आर मेड, new areas are made, and he could enter there. Likewise, our character Charlie is also finding out that some angling left some of the things and slanting down, and I thought that was wrong, but I kept on walking. मुझे लगा कि गलत है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू चलता रहा कि शायद कहीं गलत जगह में आ गया. but even then he continued. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. I didn't pass a soul phrase है बच्चों, देख लीजिएगा. मीन्स नो बडी पास्ड क्लोज टू मी, कोई भी मेरे पास से नहीं गुजरा. इट वॉज ऑल एम्प्टी प्लेस. ही कुड लिसन, नो बडी वॉज देयर, ओनली द एको ऑफ हिज फुट स्टेप्स कुड बी हर्ड. कुछ नहीं, केवल उसके फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे उसे. एंड देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड. दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. थोड़ी देर बाद उसे कुछ सुनाई देना शुरू हुआ आगे बढ़ने के बाद कि कुछ रोरिंग जैसी है. एक्चुअली इट वॉज नॉट रोरिंग, इट वॉज द टॉकिंग ऑफ द अदर पीपल. सम अदर पीपल वर टॉकिंग and there was some open space perhaps and people were talking. The tunnel turned sharp left. Left side में मुड़ जाती है वो tunnel. I went down a short flight of stairs. अब वो एक छोटी सी जिसको हम जीना कहते हैं, छोटा सा, वो उस फ्लाइट में नीचे उतर जाता है. Then it was getting down left side. I went down a short flight and then came out. अब उससे बाहर निकला on the third level Grand Central Station. जैसे कि in starting he told us already that there are only 2 level, but he is saying that no, there is third level. So today he has reached to that third level. आज वो उसी third level में पहुंच गया था. For just a moment I thought I was back on the second level. एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि वो second level में है. But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates. अब उसने थोड़ा सा ध्यान करके देखा तो उसे लगा the room was smaller. सेकेंड लेवल में तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो रूम बड़े हैं, यहाँ स्मॉलर लग रहा है. There were fewer ticket windows. Ticket windows were also comparatively less, fewer. And train gates, और train gates भी शायद उसे कम लगे. And the information booth in the central was wood and old looking. जो वहाँ पर information booth बना था, it was not the same, it was having some old looks. And the man in the booth wore a green eye shade. Eye shade mean her goggles. उसने green color के goggles पहने हैं. And long black sleeve protectors. Protectors, as you could say, wind cheater, like लंबी सी sleeves का एक protectors पहना हुआ है उसने. The light would dim and sort of flickering. Sort of flickering. Flickering means, note कीजिएगा, something which is not
perfect or continue. Flickering means weak and uneven. So there was light. ऐसा नहीं था रोशनी थी but flickering light. Then I saw why they were open flame gas light. फिर उसने ध्यान से देखा विंडो से झांक कर देखा तो actually this was nothing but it was only window light, right? Sorry, through window he saw it was only a dim light. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eyes. फिर उसने ध्यान से कंपैरिजन करना शुरू किया. उसने देखा एक ब्रास स्पिटन रखा है, स्पिटन इन विच यू कुड स्पिट, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ ब्रास का. एंड अक्रॉस द स्टेशन ग्लिंट ऑफ लाइट फ्रेज है. जस्ट encircle in your book either or note it down. Glint of light, gleam of light, shining. स्टेशन की जो एक लाइट है चुभने वाली सी वो इट कॉट माई आइज. अनदर फ्रेज, कॉट माई आइज. कॉट माई आइज मीन टू कास्ट द आइज ऑल ऑफ अ सडन, निगाह डलना. तो he saw that there was something. A man was pulling a gold watch from his vest pocket, and now he noticed that the looks of the people were different. Instead of अभी generally क्या होता है, the people wear the watch on their wrist, but it was not like that. Nowadays they don't wear, actually they are having their own mobile and all, they could see their time, but earlier the people used to have wristwatch. But here the man is taking a gold watch from his vest pocket, means he doesn't have simple watch, pocket से निकालता है. He snapped open the cover, उसको snap open किया, उसका cover open किया, glanced at his watch and frowned. And he had a look. Glanced at means have a look. Glance means look. Had a look at his watch and frowned. Frown means, you know, children, frown means to knit your eyebrows, to show like anger. The gesture of anger called frown on your face. He wore a derby hat. उसने derby hat होता है, it's a hat like hunter's gun. A black 4-button suit with tiny lapels. अब उसने 4-button सूट पहना है. इसका fashion always is changed. You might be knowing well that the coats sometime double breast, sometime single breast, 4-button, 3 buttons. So it was 4-button suit with tiny lapels. Lapels means, you know, whatever the double collars of the coat are there, these are called, the second collar is called lapel. तो उसकी जो lapels या collars हैं, second one, these are tiny means small, छोटे से हैं. And he had a big black handle bar mustache. अब उसने ध्यान दिया कि उसकी mustache भी बड़ी अजीब सी है. mustache, you know, mustache, the upper lip hair as the men wear generally. His mustache are very big, handlebar kind of those. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग. अब उसने ध्यान देना शुरू किया और देखा चारों ओर सभी ने इसी तरह के कपड़े पहने, ओल्ड फैशन काइंड. These are like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, you know, the hair at in front of your earlobes, close to earlobes, or at the side of the cheeks, that is called sideburns. The narrator or the character Charlie says that I have never seen so many beard, sideburns and fancy mustache in my life. Like बड़े अलग से हेयर स्टाइल, अलग से beard, उसे कभी नहीं देखी थी. A woman walked in through the train gate. एक लेडी भी आ जाती है. A woman came over the train gate से. She wore a dress with lack of mutton sleeves. Means उसने legs तक कुछ पहना हुआ है which is very much closely tight. And a skirt to the top of her high button. Skirt is also having button. And high button shoes he's wearing. Means she's wearing completely different kind of dress which is not seen in the time of Charlie. Back to her out on the tracks, I caught the glimpse of a locomotive. Locomotive is a kind of engine which is going to be added to the train. Then he threw a glance at the railway track and he had a glimpse of a locomotive, a very small Creer and Ives locomotive. It seems like old kind. उसे कुछ पुराने ज़माने जैसा लगा.
ये locomotive with a funnel shaped stacked, and then I knew. अब उसे कुछ आइडिया आया कि कुछ तो है, कि सब कुछ ओल्ड जैसा क्यों लग रहा है मुझे. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय. अब कंफर्म करने के लिए उसने सोचा डेट देखनी चाहिए. अब डेट देखने के लिए उसने क्या किया, ही रीच टू अ न्यूज़ बॉय. Newsboy, the boy one who was selling the newspaper, and glanced at the stack of papers. Stack of papers mean heap of paper at his feet. The boy was sitting, and at his feet some papers were kept. It was the world, and the world wasn't being published for years. You could see this, the world. It was the world mean it is the name of the newspaper. And the world hasn't been published for years. जबकि ये न्यूज़पेपर पिछले कई सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा था. He was surprised. The world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. अब उसने हेडलाइन देखनी शुरू की. पहला सरप्राइज यही था कि जो पेपर बंद हो चुका वो कैसे आ गया. बच्चा आज की डेट का बेच रहा है वहाँ पर. उसने देखा प्रेसिडेंट क्लीवलैंड इज ऑल्सो हैविंग something. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. Now see this, children. उसने कंफर्म करने के लिए देखा था कि डेट क्या है. उसने ये पुराना पेज, लाइब्रेरी समटाइम्स कीप द रिकॉर्ड. So, big fan of library. Then he saw that this is the same paper, the front I have seen earlier. इसका फ्रंट मैंने पहले देखा था. कहाँ पर, लाइब्रेरी में. और ये 11 जून 1894 का पेपर है. आज यहाँ क्या कर रहा है. I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब उसे आइडिया आ गया कंफर्म कि मैं ओल्ड टाइम में पहुंच चुका हूँ. Then he thought I must go to the ticket window and I must purchase tickets for me and my wife Louisa. Louisa is the name of the wife. And wherever I want to go in United States, I can go. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Galesburg, Illinois is a place where he wanted to go always. ये वो जगह है जहाँ वो हमेशा जाना चाहता था. Right, children? Now, rest of the part of this lesson we'll do in the next.